Good morning, everyone. In this video, we are going to learn about how to prove a given number as irrational number. So, some examples I have taken here, and these examples are directly from the NCERT 10th standard textbook. So, through these examples, we will understand if any number will be given to you, which is most probably the irrational number, but we have to prove theoretically that the given number is an irrational number. One constant or one same theory is there for these numbers. So we are going to learn about this in this video. After watching this video, you will understand if any number will be given, we can prove that number as an irrational number. And one thing that you have to remember that for the board examination, this question is compulsory. So every time this question is coming for the board examination, for example, show that or prove that root 5 is irrational or any other number will be given also. So let's see how we can prove the given number as irrational number. So पहले जो हमने एग्जांपल लिया है वो है कि prove that root 5 is irrational. So हमें क्या करना है यहाँ पे? We are proving these proofs by indirect method. So indirect method का मतलब क्या होता है? जो हमें प्रूव करना है exactly उसके उल्टा कंसिडर करना है हमें. So here we have to prove that root 5 is irrational. So हम consider क्या करेंगे? Root 5 is a rational number. So assume root 5 is a rational number. Is a rational number. So already we learnt about the definition of rational number. अगर root 5 rational number होता है तो हम कैसे लिख सकते हैं? Therefore root 5 is equal to a upon b. मतलब हम रूट 5 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं बट हियर सम कंडीशंस आर देयर दिस कंडीशन वी आर राइटिंग वेयर a and b are co-prime integers co-prime integers. So therefore अब क्या करते हैं b को जो यहाँ पे डिवीजन में उसको लेफ्ट साइड में लेते हैं सो इट विल बी रूट 5 इंटू b इज इक्वल टू e. So simple transposition operation हमने यहाँ पे किया है. Now next step is we have to take square of both sides. अगर मैंने दोनों साइड का स्क्वायर लिया तो रूट 5 का बन जाएगा ओनली 5 और b का बन जाएगा b square and a is a square. Here you can write squaring both sides. Squaring on both sides. Now इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं कि आगे जाके हमें यूज होने वाला है. So we learned that whenever we are able to write 5b square is equal to a square, we can write here, therefore 5 divides a square. 5 divides a square. क्योंकि अगर 5 और किसी नंबर की मल्टीप्लीकेशन a square आ रही है तो उसका मतलब क्या होता है इस a square को 5 से कंप्लीट डिवीजन जाती है और अगर a square को 5 से कंप्लीट डिवीजन जाती है तो a को भी 5 से कंप्लीट डिवीजन जाती है. दैट इज 5 divides a also. A also. We'll give this as equation number 2. Next, अब क्या हम कंसिडर करेंगे अगर 5 से a को कंप्लीट डिवीजन जाती है देन वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5c. a इज इक्वल टू 5c क्योंकि अगर a कोई भी नंबर हो उसको अगर 5 से डिवीजन जाती है तो किसी और नंबर के मल्टीप्लीकेशन में हम उसको लिख सकते हैं. अब यहाँ पे और क्या करेंगे दोनों साइड का स्क्वायर. a का स्क्वायर a स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर. नाउ वी हैव टू गो टू इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में देखो a स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या लिखी है 5b स्क्वायर. उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है यहाँ पे पुट करनी है. सो हियर फर्स्ट वी विल राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. सो a स्क्वायर की जगह हम अब क्या पुट करेंगे 5b स्क्वायर. 5b square is equal to
25 c square. Here the reason is from 1. Now दोनों साइड को अगर तुम देखोगे तो 5 and 25 बोथ कैन बी डिविजिबल बाय 5. दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा b स्क्वायर, और 25 डिवाइड बाय 5 इज 5 c स्क्वायर. So this statement is exactly similar to this statement. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर b स्क्वायर की वैल्यू 5c स्क्वायर आ रही है, so we can write therefore 5 divides b स्क्वायर. और अगर 5 से b स्क्वायर को डिवीजन जाती है, then we can write 5 divides b also. b also. This is equation number. अगर अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर सॉरी ये 3 आएगा, इक्वेशन नंबर 3 देखोगे, इन दोनों में क्या लिखा है हमने, 5 डिवाइड्स a, 5 डिवाइड्स b. सो 5 एक ऐसा नंबर है जो a और b दोनों का भी फैक्टर है. सो व्हेन इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ a एंड b आर नॉन कोप्राइम नंबर्स, मतलब वो कोप्राइम नहीं हो सकते बिकॉज 5 उनका क्या है, कॉमन फैक्टर है. फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी कैन राइट, हियर वी आर राइटिंग फ्रॉम 2 and 3 5 is a common factor of a and b. So अगर 5 a और b का कॉमन फैक्टर है तो a और b कोप्राइम नंबर्स नहीं हो सकते. सो ये वी कैन राइट बट this is a contradiction to a and b are co-prime. a और b are co-prime. Therefore अगर जो हमने कंसिडर किया था उसके अगर उल्टा आ रहा है, या सपोज कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, सो वी आर राइटिंग और एजम्पशन इज फॉल्स. सो अगर हमारा एजम्पशन फॉल हुआ, हमने एज्यूम क्या किया था कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, सो वो फॉल्स हुआ, मतलब रूट 5 क्या होगा यहाँ पे, इरेशनल नंबर. देयरफॉर रूट 5 इज एन irrational. Now we will prove that 3 plus 2 root 5 is a rational number. This question is easier than the earlier one because in earlier question we were proving root 5 is an irrational number. So अगर तुम्हें 3 plus 2 root 5 और इसी फॉर्म में कोई नंबर दिया होगा तो इसका प्रूफ पहले से ज़्यादा इजी है. कैसे इजी है देखते हैं. सेम मेथड वी आर यूजिंग हियर. Which method? That is an indirect proof. We are writing assume that 3 plus 2 root 5 is a rational number, is a rational number. तो हमें पता है अगर ये रैशनल नंबर होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b with same reason where a and b are co-prime integers. Reason will remain same. Now हमें अब क्या करना है, इसमें रूट 5 को छोड़ के बाकी के सब नंबर्स राइट साइड में लेने हैं. तो कैसे ले सकते हैं हम, फर्स्ट आई विल राइट हियर रूट 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3. जो यहाँ पे एडिशन में प्लस 3 था वहां जाने के बाद माइनस हो गया. सो यहाँ पे 2 रूट 5 is equal to, here we can do the cross multiplication, a minus 3b
अपॉन b इंटू वन b। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में वहां जाने के बाद डिवीजन में जाएगा। सो √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2b। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे एक LHS है और एक RHS है। RHS में क्या प्रेजेंट है, a माइनस 3b अपॉन 2b, एक ऐसा नंबर है जिसको हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में प्रेजेंट किया है। सो RHS तो हमारी क्या होगी यहाँ पे, रैशनल नंबर। सो अगर RHS रैशनल नंबर है तो LHS भी क्या होनी चाहिए, रैशनल नंबर। बट पहले हमने क्या प्रूव किया था कि √5 इरेशनल नंबर है। सो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, therefore we have a minus 3b upon 2b is rational, is rational. Therefore √5 is also rational. हमने यहाँ पे क्या लिखा है, √5 is a rational number, but it is not possible. So here we can write, but it is contradiction that √5 is irrational. √5 is irrational. Therefore अगर कॉन्ट्रडिक्शन जिस जिस स्टेटमेंट में आता है, इनडायरेक्ट प्रूफ का टारगेट ही यही है। एट द एंड वी हैव टू शो सम कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मींस एग्जैक्टली ऑपोजिट थिंग्स। सो अगर ये कॉन्ट्रडिक्ट हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर आवर assumption is false, is false। therefore अगर हमारा assumption false हुआ, then we can write therefore 3 plus 2 √5 is irrational, is irrational। So in this way we can prove this thing। These types of questions are easier than the first one क्योंकि पहला जो क्वेश्चन था वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। फॉर एग्जांपल प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, √7 इज इरेशनल। सो उसमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट यहाँ पे वी कैन राइट डायरेक्टली बिकॉज ऑलरेडी वी न्यू दैट √5 जो नंबर है ऑलरेडी क्या है, इरेशनल नंबर है। सिमिलर मोर क्वेश्चन विल टेक हियर। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, इट इज division or quotient, or we can say ratio of the two numbers, 1 upon √2 is irrational। So इसको कैसे प्रूव करेंगे, सेम मेथड। फॉर एवरी क्वेश्चन वी आर यूजिंग द सेम मेथड। assume that 1 upon √2 is rational, 1 upon √2 is rational। so अगर वो रैशनल हुआ तो हम कैसे लिख सकते हैं, therefore 1 upon √2 is equal to a upon b, with same reason where a and b are co-prime integers, co-prime integers। therefore now हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी ट्रांसपोजिशन करेंगे। some students are saying the cross multiplication but is not actually the cross multiplication। जो b राइट साइड का डिनोमिनेटर में है उसको लेफ्ट में लेके आएंगे। so it will become b is equal to √2 वहां पे जाएगा, so it is √2 as it is, और उस साइड के a को यहाँ पे लेके आएंगे। so it is b upon, sorry, b upon a is equal to √2, b upon a is equal to √2। now you can see on the LHS b upon a is there, that is the numerator and denominator we have written। so obviously कौन सा number होगा, according to the definition of rational number, this LHS is a rational number। so directly we can write here, therefore since b upon a is a rational number, b upon a is a rational number,
सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स, अगर LHS रैशनल होती है तो RHS भी क्या होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए. देयरफॉर √2 is also a rational. √2 is also rational. But हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, एंड दिस इज स्टैंडर्ड थिंग, दैट √2 कौन सा भी नॉन स्क्वायर नंबर अगर स्क्वायर रूट में होता है तो इरेशनल होता है. सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. You can use the but word here also, but this is a contradiction. So whenever you are reaching to the contradiction, you can write that therefore our assumption is false. Our assumption is false. So अगर assumption false हुआ, हमने assume क्या किया था, 1/√2 is rational. So उसका उल्टा true होगा. Therefore 1/√2 is a rational number. Sorry, 1/√2 is irrational. 1/√2 is irrational. So in this way, directly we can write, because 1/√2 is nothing but 1 divided by √2. So √2 already we know that is irrational number. So similar, one more example we have taken here, that is a multiplication of one rational and irrational number. Here 7 is rational and √5 is irrational. So we have to prove that 7 multiplied by √5 is irrational. If you remember, in the ninth standard, we learned about the multiplication of rational and irrational number, division of rational and irrational number. We are getting these things from there only, but we are proving here in a theoretic way. So same, assume that 7 √5 is rational. अगर 7 √5 rational हुआ, so we can represent 7 √5 is equal to A upon B. Same reason, where A and B are co-prime integers. Co-prime integers. Therefore सेम प्रोसीजर करनी है, √5 को एक साइड में रखना है. टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो भी रूट में नंबर होगा उसको एक साइड में रखना है, बाकी के सारे नंबर्स, बाकी के सारे टर्म्स हमें क्या लेने हैं, राइट साइड में भेजने हैं, दूसरी साइड में. सो ए ऐसे ही रहेगा. 7 जो मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ आने के बाद डिवीजन, दैट इज 7b. So same thing you can observe here. On the right side, we are having a upon 7b. a upon 7b मतलब एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, और a और b क्या है, इंटीजर्स है. So we can say that RHS is a rational number. So we can write, since a upon 7b is rational, is rational. अगर RHS रैशनल हुई तो LHS भी क्या होती है, therefore √5 is also rational. बट √5 रैशनल हो सकता है क्या, ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, सो इट इज आल्सो कॉन्ट्रडिक्शन. बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. अगर कोई भी स्टेटमेंट लास्ट में तुम्हारा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है तो हमारा एजम्पशन क्या होता है, फॉल्स होता है. देयरफॉर आवर एजम्पशन इज false. Therefore 7 √5 is irrational. In this way, we can prove the theorems based on prove that or show that given particular number as irrational number. Just remember one thing, whenever they are asking to prove only √5, only √3 or only √7 as irrational number,
then only that whole theory we have to write. But if they are asking addition between rational and irrational, subtraction, multiplication or division, just like here they have given the multiplication. At that time, you can use the earlier property or earlier thing that any non-square number in the square root is always irrational. So इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर कि ये जो क्वेश्चन होता है शो दैट रूट फाइव इज इरेशनल और इन टाइप ऑफ नंबर ऑफ इरेशनल, ये बोर्ड एग्जाम के लिए कंपलसरी आता है. बोर्ड एग्जाम के लिए कंपलसरी आता है. और अगर एक क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम के लिए, दिस क्वेश्चन इज 100% फॉर 3 मार्क्स. कितने मार्क्स के लिए होता है? 3 मार्क्स के लिए. और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आए, ये क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन प्रॉपरली. आई होप you have understood how to prove whenever any core number is given. Core number means just like the this question, and addition of rational and irrational, division of rational and irrational, and here multiplication of rational and irrational. Prepare properly, because if you prepare this question, you will get the 3 marks 100%. Whichever theory or whichever conditions we have written here mentioned properly, because यहाँ पे जो हम लिखते हैं कि A and B are को प्राइम नंबर्स. को प्राइम का मतलब क्या होता है? ए और बी का कॉमन फैक्टर एक ही मिलेगा और होगा 1. एंड हियर वी आर प्रूविंग दैट it is having more than one common factor, that is the 5. Then only we can prove this. An integer already we learned in the definition of irrational numbers. And here one condition is also there, that is the b is not equal to 0. But since they are co-prime numbers, that condition is not required here, क्योंकि जब वो नंबर co-prime होंगे तो ऑब्वियसली ए और बी क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो इंटीजर्स होनी चाहिए. सो फॉलो दिस मेथड प्रॉपरली. और यू कैन ऐड आल्सो दिस थिंग हियर दैट बी इज नॉट इक्वल टू 0. Actually we have already written that they are co-prime numbers, so that is not required, but you can add this thing also here. So understand and solve these questions according to this. Thank you all of you. Bye.